In this lecture, we are going to discuss the accounting cycle. As we know, accounting is basically an art to record the financial transactions, and finally, the recorded transactions is summarized to prepare the final reports, which are used by the management for taking the decisions. हम ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि हर कारोबार में हर साल सेम ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती हैं। साल के शुरुआत में कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, साल के दौरान वो चल रही होती हैं, साल का इख्तिताम होता है और फिर अगले साल से बिल्कुल उसी तरह से दोबारा आगाज हो जाता है। इसी नेचर को सामने रखते हुए अकाउंटिंग का आगाज होता है। वो बिजनेस के साथ साथ चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है और फिर साल के इख्तिताम पर चीज़ों को क्लोज किया जाता है और अगले साल से एक दोबारा अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। चूंकि ये प्रोसेस हर साल सेम चल रहा होता है, तो इसी रिपीटेशन को देखते हुए अकाउंटिंग के मामलात को अकाउंटिंग साइकिल तस्वुर किया जाता है। अकाउंटिंग साइकिल से मुराद अकाउंटिंग के वो स्टेप्स हैं जो हर साल परफॉर्म किए जाएंगे और एक मखसूस तरतीब में ही परफॉर्म किए जाएंगे। तो आइए अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट दीज स्टेप्स आर। Accounting basically starts when some financial transaction in a business occurs. Financial transaction means anything with a monetary value for the business happen. So accounting starts with the recording of it. जो भी कुछ हुआ उसको हमने रिकॉर्ड किया, यहाँ से अकाउंटिंग का आगाज हुआ। Now throughout the year, whatever transactions would be happening in the business will be recorded by the accountant. Accounting उनको सबको रिकॉर्ड करती रहेगी। These recorded transactions then, after taking the balances from the ledgers, will be converted into the trial balance. Means first the financial transaction occur, then it is recorded using some system, single entry, double entry. These recorded transactions then converted into ledgers. Ledgers basically gives us the balances, and these balances are then converted into trial balance. Now, trial balance is basically the summary of all the heads would be using in the business. ट्रायल बैलेंस के अंदर वो तमाम हेड्स मौजूद हैं जो कि एक कारोबार में मुसलसल इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन नामों को यूज करके कारोबार की चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ट्रायल बैलेंस तैयार हो चुका है। अब इस ट्रायल बैलेंस की बेसिस के ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर ये देखा जाएगा कि किसी रिकॉर्डेड मामले में कोई तब्दीली दरकार है। If it is so, then adjusting entries will be passed. Due to these adjusted entries, trial balance will be affected. So we will be in need of renewed trial balance. So adjusted trial balance will be prepared. And after finalization of adjusted trial balance, the most important aspect, final reports on the basis of it will be generated. These final reports will actually highlight or summarize the whole activities of the last year. Year will end, and at the end of the year, accounts will be closed. And from the next day of, which is going to be the first day of the next year,
accounting cycle will restart it again. Again, transactions of monetary nature will be recorded, ledger will be prepared, upon ledger, trial balance will be prepared. Trial balance will help in generating the final report, and another year will end. After closing all the accounts, next year we will be prepared for the next year. So because of this cyclical nature of the accounting steps, these accounting steps are grouped together and named accounting cycle.